Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. So in this particular video, we'll be discussing the topic-wise news analysis. From today onwards, we have revamped our editorial analysis series. So from today itself, it would be like daily topic-wise analysis. So whatever topic is important that has been reported either in the editorial or in the newspaper would be discussed in the series, right? And we have taken the reference from the Hindu as well as from the Indian Express. So the news would be included from both of these newspaper. So whatever important news are there, that would be covered under this series, right? So let's get started. And before I begin, I would like to tell you that we are organizing a mega webinar. So the speaker of the webinar is Jubin Mohan Patra. He is an IPS officer of 2018 batch. And basically this session is going to be scheduled for 17th of May, 6 p.m. to 7 p.m. And the theme of the discussion would be how to clear the civil services examination in very first attempt and the preparation strategy with the job, right? So do not forget to participate in this series. And for more details, you can refer to the description section of the video as well. Now coming to the today's topic, that will be a discussion. These are the number of the topic that we'll be discussing today. So the first is marine environment in the Asia Pacific region, free food grain from the migrant workers, state and its sale tax revenues, school education during Corona, and funding of the MSMEs, that is micro, small, and medium enterprises. So these topics have been taken from both from the newspaper of Hindu as well as from the Indian Express, right? And I'll be discussing some important MCQs as well, and we'll be discussing the previous year explanation at the same time. So the previous day's explanation would also be at the end of this video, and a mains question would be there for practice. So the practice question would be from any of the topic, whichever is relevant. This would be subsequently changing. This not in like previously we have in-depth analysis on that particular topic we used to ask the question. So among these 5 topics, a question would be asked, right? Now coming to the first news, that is marine environment in the Asia Pacific region. So talking about this particular topic, a news has been reported in today's Hindu, that is keeping Asia Pacific afloat. So this is reported in the Hindu, and the entire editorial talks about the marine environment. So we'll look into the detail of it, what exactly has been talked upon in this editorial and the news that is relevant for you to understand. So first and the foremost, what is Asia Pacific? See, Indo-Pacific or Asia Pacific is a part of the world near West Pacific Ocean. So as you can see in the map, this is the region of the West Pacific Oceans. So this is Australia, this is Papua New Guinea, New Zealand, Japan, Korea. These are the countries of basically the Hong Kong, Philippines, Indonesia, Singapore. These are the countries: India, Pakistan, Sri Lanka, and the other side we have the Indian Ocean. So this is the map, which again is relevant for you because anytime UPSC can ask something on related to the map exam. Basically, map work is being asked. So this is pretty relevant for the prelims examination. Now talking about the Asia Pacific region, that generally include East Asia, South Asia, Southeast Asia, and Oceania. Fine. So these are the these contribute. These are the member countries of the Asia Pacific region. Now coming to the news, basically this talks about the sea foods provide the livelihood, a sense of identity specification to the coastal communities in the Pacific Island. So अगर बात करें सी का, जो सी फूड्स है, that is again a source of income to many of the people, and this region provide the world's largest producer of fish. So this region is the world's largest producer of fish, the Pacific, Indo-Pacific region. फाइन. बट रिसेंट टाइम में हुआ क्या है, कुछ एक्सकलेशन देखी गई है जिस वजह से जो मरीन इन्वायरमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, एंड द नंबर ऑफ द फिशरीज पॉपुलेशन इज अगेन deteriorating. Fine. So in less than century, climate change is again becoming unsustainable source of management or degradation of environment ecosystem and diminishing biodiversity. As I told you, the biodiversity is getting diminished. एंड हमारे पास ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, उसके जो गोल 14 है, उसके जो टारगेट है दैट इज लाइफ बिलो द वाटर. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टारगेट. सो दिस इज अगेन वेरी रेलिवेंट फॉर यू. सो हमारी जो SDG की जो टारगेट्स है उसमें ये भी कहा गया है कि लाइफ बिलो जो वाटर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है, उनकी भी ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है. नाउ एक स्टडी की गई थी बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसको ESCAP भी कहते हैं. उनके मुताबिक उन्होंने बेसिकली स्टडी पब्लिश किया है, जो टाइटल है स्टडी की, दैट इज इनसाइट फ्रॉम द चेंजिंग स्लेज, दैट इज एक्सक्लरेटेड रीजन एशिया फॉर सस्टेनेबल ओशियन एंड पैसिफिक रीजन. तो ये जो थीम स्टडी थी इसमें ये बताया गया है
कि विदाउट डेटा वी आर स्विमिंग इनटू द डार्क, कि अभी हमारे पास एग्जैक्टली बहुत सारे डेटाज नहीं है कि सिचुएशन क्या है मरीन फिशरीज की, या जो मरीन इकोसिस्टम है उसका क्या अभी डेटा प्रेजेंटली वी डू नॉट हैव. नाउ डेटाज आर ओनली अवेलेबल फॉर 2 और अमंग द 10 एशियन कंट्रीज. सिर्फ 2 कंट्रीज के डेटा हैं हमारे पास, राइट. उसके बाद जो एडवर्स इफेक्ट है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. तो अगर बात करें, पैसिफिक प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक बाय द वॉल्यूम. ठीक है, जितने टोटल वॉल्यूम्स हैं उसके जो हाफ है 50% है दैट इज बीइंग नो इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडो पैसिफिक रीजन. और अगर कंज्यूम्स की बात करें तो कंज्यूम ओनली 38%. ओके, 38% टोटल कंजम्पशन इस रीजन में. और प्लास्टिक रिजल्ट डबल बर्डन टू द ओशन. जैसे अगर बात करें, इट जनरेट मोर CO2 दैट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द ओशन, एंड फाइनली द प्रोडक्ट एंटर इनटू द ओशन एज एन pollution. तो plastic pollution has also emerged one of the major problem, and it is significantly impacting the marine population. Now, some of the important concern is related to this, the marine ecosystem. The level of the overfishing has exponentially increased. बहुत exponential growth हुई देखने को मिली है fisheries में, and living fish stock and food system vulnerable. अब उसमें क्या कर सकते हैं, जो मरीन प्लास्टिक जो बेसिकली पॉल्यूशंस है दैट इज अ कोर्स ऑफ जो रीजनल रिवर्स है दैट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेब्रीज दैट इज कमिंग फ्रॉम द ओशन, फ्लडिंग टू द ओशन, राइट. तो बहुत सारे डेब्रीज जो रिवर कैरी कर रहे हैं वो डायरेक्टली ओशन में आकर के ड्रेन आउट हो रही है. नाउ environment डिक्लाइन इज ऑल्सो अफेक्टिंग द फिश स्टॉक्स. जो हमारे फिश स्टॉक्स है, जो ओवरऑल फिश पॉपुलेशन है, उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ रहा है, राइट. नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, कीपिंग द ओशन प्लेट. बेसिकली अगर बात करें, जो ओशन प्लास्टिक फ्री है, ज़रूरी है उसको कैसे किया जाए, एंड पॉलिसी टू प्रमोट अ circular economical approach is needed. So the first and foremost thing is to make ocean plastic free and to minimize the resources that require economic incentives and disincentivize the things. So we need to have a penalty procedure as well. कुछ चीज़ों को penalize करना है, कुछ चीज़ों को motivate करना है, ताकि जो marine population है, जो fish system है overall, उसको regulate किया जाए, एक sustainable तरीके से बनाए रखा जाए, right? Now coming to the other important news that is there, so we have the topic called free food grain for migrant worker. So इसी से related newspaper में आज के front page में आपको ये news मिल जाएगी, migrant worker to get free foods. So what are the important point that you should know in this? So as you know that lockdown has been continued for more than 50 days. This is a nationwide lockdown that has continued. और उसी क्रम में प्राइम मिनिस्टर ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपीस का अमाउंट दिया है. एंड दिस 20 लाख इज़ नॉट द एब्सोल्यूट 20 लाख रुपीस. ऑलरेडी इसमें से 6 लाख के आसपास खर्च हो चुके हैं. सो वी हैव अ रिमाइंडर ऑफ ओनली 14 लाख करोड़ रुपीस, राइट, बिकॉज RBI हैज़ ऑल्सो गिवन सम प्राइस. और यहाँ पे सरकार ने 1.73 का ऑलरेडी पहले पैकेजेस दिया हुआ है. सो दीज इंक्लूडिंग जो अभी जो रिमाइंडर है, जो हमारे पास बैलेंस है, दैट इज ओनली 14 लाख करोड़ रुपीज़. सो उसमें अभी गवर्नमेंट ने दे हैव अनाउंस्ड 3,500 करोड़ ऑफ सेकेंड ट्रांचेस एज अ स्टिमुलस, एंड दिस वुड बी स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव राशन कार्ड. ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए सरकार ने अलग से फंड बनाया है 3,500 करोड़ रुपए के आसपास, ताकि उनको एक स्टिमुलस मिले. और जो 8 कोर माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दे आर अगेन स्ट्रैंडेड, फाइन. सो दे डू नॉट हैव द प्रॉपर प्लेस टू लिव. वो किसी के लिए किसी भी रिलीफ कैंप पे रह रहे हैं या गवर्नमेंट लेग बिल्डिंग्स पे रह रहे हैं. सो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट सो दैट द बेनिफिट इज ऑल्सो बीइंग अवेल्ड टू दीज माइग्रेंट वर्कर्स. और जो सेकेंड ट्रांचेस ऑफ अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो रिलीफ पैकेजेस हैं, उसमें कुछ स्पेशल चीज़ों को लिखा गया है. दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी बाय द अर्बन हाउसिंग. जो अर्बन हाउसिंग है उस पर किस तरह से ध्यान दिया जा सके. एंड सेकेंड, वेंडर्स एंड फार्मर, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसको किस तरह से बेसिकली दीज आर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर पीपल, सो उनको किस तरह से एक स्ट्रीमलाइन किया जाए एंड दे कुड बी गेटिंग द मॉनेटरी बेनिफिट्स. नाउ द थर्ड इज द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर द स्मॉल बिजनेस. सो गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वेव ऑफ सम ऑफ द फंड. एक अमाउंट फिक्स की जाएगी, उससे अमाउंट से जिनके पास कम के लोन होंगे उनको वेव ऑफ किया जाएगा, राइट. And free food grain is also provided to migrant worker in extension of the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके तहत जो benefits हैं that would again be extended. Now some more important points that you must understand for this news is like this is the second stimulus package of 14,000 crore, 14 lakh crore almost, because as I've told you 20 is no more, it is we have only left with the 14 lakh crore rupees, right.
So close to 8 crore migrants who are not covered under this scheme would be provided 5 kg of grains. Okay, उनको 5 किलो के आसपास अनाज मिलेगा, और 1 kg of chana would be provided for per family for 2 months. So this government has taken this initiative. Now the second is affordable renting housing would be again be planned under the Pradhan Mantri Awas Yojana, and interest dimension which I have already told you. So this the worth is around 1500 crore rupees, and announcement would be under the Mudra Sishu loan, that is up to 50,000 रुपीज. जो 50,000 से कम के जो लोन है या उसके आसपास के लोन है उसको इंटरेस्ट सब्वेंशन वर्थ दिया जाएगा. Now one nation one card is again provided. This is to enable जो PDS है वो सारे लोगों को मिल पाए. 100% national coverage हो by March 2021. And fund worth of is 6,000 crore rupees would again be used for boosting employment for the Adivasis and tribal people. जो भी बेसिकली शेड्यूल ट्राइब के जो एरियाज हैं उनको स्पेशली डेवलप करने के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपीज़ के लिए स्पेशल पैकेजेस दिए हैं. एंड अ स्कीम वर्थ ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज़ टू फैसिलिटेट ईज ऑफ एक्सेस टू द क्रेडिट टू द स्ट्रीट वेंडर्स. जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो डेली किसी चीज़ की बेसिकली जो दिहाड़ी के जो मजदूर हैं उन लोगों को स्ट्रीट वेंडर्स वुड ऑल्सो बी गेटिंग सम ऑफ द फंड इन दैट. तो उसके लिए स्पेशली 5,000 करोड़ रुपीज़ अलग कर दिए गए हैं. ना अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात करें, एग्रीकल्चर लोन्स जो है उसमें 63 लाख्स एग्रीकल्चर लोन्स है वर्थ ऑफ 86,600 करोड़, राइट, 86,600 करोड़. सो दैट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर March 1 to April 30. और कंसेशन दिया जाएगा लोगों को 2.5 करोड़ के आसपास किसान जो बेनिफिशरीज हैं. दिस वुड अगेन बी वर्थ ऑफ 2 लाख करोड़ रुपीज. फाइन. एंड सेंटर हैज रिलीज्ड 11,000 करोड़ टू स्टेट. बेसिकली जो स्टेट की जो डिजास्टर रिलीफ फंड होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 11,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंट्रीब्यूट करेगी टू सेट अप द शेल्टर्स फॉर माइग्रेंट पीपल. एंड 14.62 करोड़ per person would be working to generate मनरेगा अंडर May 30. So the government is also putting harder so that ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनरेगा वर्कर में contribute कर सके and they could earn their daily wages so that they could have the livelihood option. Fine. Now coming to the other news, that is states and its sale tax revenue. So this is the topic of the news. और इसी पे एक न्यूज़ भी आज के न्यूज़पेपर द हिंदू में है, स्टेट्स कैन नॉट बी लेफ्ट टू द सेंटर मर्सी. सो आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्टेट्स एंड इट्स टैक्सेस रेवेन्यूज, राइट. सो अगर बात करें, देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द मेजर सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लॉकडाउन के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू जनरेशन के जो तरीके हैं, द सोर्सेज जो थे वो काफ़ी कम हो गए हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि दे कुड सेल अल्कोहल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. And this approach has been very unpopular and many people have protested against the sale of the alcohol in various states, right. And fear of crowding is a consequence of again the spread of COVID-19, because जिस तरह से gathering हो रही थी, it is again a chances that this infection can take a toll, right. अगर बात करें शेयर्स ऑफ स्टेट टैक्स कलेक्शन के लिकोर में, तो कुछ टॉप स्टेट्स हैं जिनके मैं आपको फिगर बताना चाहूँगा. तो मिजोरम इज़ द स्टेट जो कि लिकर टैक्स कलेक्शन में सबसे ज़्यादा है. उसके बाद वी हैव फॉलोड बाय पुडुचेरी. द थर्ड इज़ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना. दीज आर द टॉप परफॉर्मेंस स्टेट इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम द अल्कोहल. सबसे बॉटम स्टेट्स में जो है दैट इज़ गोवा 9.1, आसाम, Manipur, Gujarat and Bihar are the dry states. So basically they do not get revenues from the alcohol, from the liquor, right. So these are the data that is from 2018-2019. These are the official data. Now coming to the options that is available with the state, because the state at this point of time they do not have any options, right. The state government are forced to adopt the desperate and revealed measures for opening the liquor shop, and which was again being protested because the problem is that state do not have the finances. Talking about the problem about the GST, जो GST के साथ problem रही है, that has forced the state to surrender the power and raise the independent through the local taxes revenues. और जो बात की गई है, state government has also not received the share of GST which was about to be coming from the central government. तो यहाँ पे भी अभी इनकी जो areas रहे हैं central government के पास, so this also they want that should be getting at earliest so that they could start with some of the stimulus package and they could revive their state economy.
Now state have their own taxes. अगर बात करें most of the state तो they have the combination of their own taxes. For richer states like Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Delhi, Karnataka, Punjab, Haryana and Kerala, so there are almost 70% of their revenue come from the taxes and their state boundaries, right? So this is one of the major sources. Now the other available sources to the states to raise fund, because in this lockdown there's no state boundaries interstate transportation, right? So the other option that they have from the income would be petroleum products, alcohol, lottery tickets, electricity, land, and vehicle registration. So at this point of time, many of the things has been shut down. You cannot go for lottery tickets. You cannot go for vehicle registration, petroleum products, because there's no vehicles allowed. Okay, so because of this, only alcohol was allowed, and that also was not very welcome decision that is coming from the people. Many have protested that government should completely shut down and no should continue the lockdown with abstinence of the sale of the alcohol in any of the state. Now coming to the other important topic, that is funding the MSME, that is micro, small and medium enterprises. So in this particular topic, we got a news that is the credit lifeline. So this is the news in the Indian Express, and the entire theme of this topic is talking about the MSME sector. As you know that MSME is a backbone of the national economic structure, and it has acts as a bulwark to Indian economy. अगर बात करें जो कंटिन्यूड रिफॉर्म की या कंटिन्यूड फोकस की, so we have sustained Indian agriculture exponential growth coming from the microeconomic stability. So as you know, MSME has contributed a lot in the Indian manufacturing sector as well, and this contribute almost 30% to the GDP of Indian economy. और जो फर्स्ट पैकेज यहाँ पे अनाउंस की गई है गवर्नमेंट की तरफ से पुअर लोगों के लिए, एंड द सेकेंड इज राइटली अबाउट द क्रेडिट टू द स्मॉल एंटरप्राइजेस. सो सरकार ने जो पहला स्टिमुलस पैकेज दिया था 1.73 लाख करोड़ रुपीज़ का, सो दिस वाज ओनली डेडिकेटेड टू द पुअर पीपल. नाउ द अगेन द अनाउंसमेंट विच हैज़ कम फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइजेस को ध्यान रखा गया है, एंड आई टोल्ड यू दिस इज 20 लाख करोड़ रुपीज़ दैट हैज़ बीन पम्प्ड इनटू द इकोनॉमी. Now, a series of measures has been taken to provide credit support to the micro, small and medium enterprises to address the gap. जो भी gaps हैं MSME sectors में, जो छोटे लघु उद्योग हैं, उनको किस तरह से बढ़ोतरी की जाए, उनके जो व्यापार हैं, उनके जो संगठन हैं, उनमें किस तरह से they could build a channelization. That is what government is looking forward. Now, putting up measures that is announced by RBI has not very desired effect. So RBI ने जो लिक्विडिटी की बात की थी उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में देखने को नहीं मिले. एंड जो गारंटी होनी चाहिए बेसिकली लोन एक्सटेंशन की, दैट वुड बी अगेन फॉर 6 months एंड लेंडर हैव द जीरो रिस्क शॉक्स. एंड दिस स्कीम वुड टुगेदर be again targeted to provide the benefit of 75,000 crore rupees liquidity in the NBFC companies. So this is a special that government has targeted to the NBFC so that a liquidity can be pumped into this sector. And 50,000 crore fund would again be provided as an equity to the MSME. So this would be the direct amount which would be acting as a liquid money, right? And a corpus of around 10,000 crore would be again provided by the government to this sector. Now talking about the importance of the MSME. So see, MSME has a huge importance in the Indian economy. First, it contribute to the employment, because almost this is the second largest employment generation sector after agriculture in India, and it contributes to the GDP. As I told you, it is contributing to almost 30%. And you can say 6% is of manufacturing and 24% of the GDP from services. So in totality, it would be contributing more than 30, close to 32%, right? नाउ बात करें अगर MSME की, तो दे हैव टारगेटेड टू द GDP. यहाँ पे सरकार ने सेट किया है कि 50% तक GDP कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है बाय 2025 एंड मेक इंडिया $5 trillion इकोनॉमी. सो दिस टारगेट वाज सेट बिफोर, बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक इट वुड बी स्ट्रेचिंग. 2025 तक तो नहीं, बट 2030 तक वुड बी अचीविंग द $5 trillion इकोनॉमी. If you talk about the export, it contributes to almost 45% of the export in India. और जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो MSME प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज, एंड इट हैज़ ऑल्सो importance in the financial inclusion. So the small industries, retail businesses in tier 2 cities can create opportunities to people to use banking services and their products. Now talking about a graph representation, अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट पे बात करें तो 45% है, एक्सपोर्ट में 40%, इंडस्ट्रियल यूनिट में 95%, एम्प्लॉयमेंट में 42 मिलियन लोग जो हैं दो यहाँ पे बेसिकली रोजगार या अपने अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ एक्सप्लोर करते हैं, एंड प्रोडक्ट फॉर मोर देन
8,000 is there, right? So the Indian SME values have more is about $5 billion. So this is again an important point. If you're writing this answer in the mains examination, do not forget to include all these important points, right? Now, coming to the other topic, that is school education during Corona. So, in this particular topic, we have a news for today's newspaper, that is schooling at the time of Corona. So, this talks about the COVID-19 pandemic and the change education system forever. People are looking forward for a new era of learning system, and that method is a teaching learning approach, that is a virtual methodology. And nearly 68% of the student in the higher classes use a smartphone. So this is a time that we should use the smartphone very judiciously, and we try to make it possible that learning is coming through the smartphone. And everyone is worried about their well-being of child, because this is the time when many of their colleges were about to take admission. तो बहुत colleges की admission या school के admissions रुके हुए हैं. So what would be the academic calendar? So this is again a great cause of concern for the academic session of the children's. और अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो वी हैव अ एग्जांपल ऑफ रेनाउट एकेडमी कॉल खान एकेडमी. ये यूएस बेस्ड एकेडमी है, जिन्होंने क्लासेस के लिए इंटरनेशनली रेनाउट टीचर्स को इंडल्ज किया हुआ है, एंड देयर आर मल्टीपल कोर्सेज विच दे आर रनिंग, राइट. और रोल ऑफ पेरेंट्स टीचर हैव ऑल्सो इमर्ज्ड इन दिस टाइम. सो द पेरेंट्स एंड टीचर्स दे नीड टू बी कंपेंशनेट when it come to the education of the child, right. And बात करेगा टीचर्स और स्टूडेंट की, तो देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल लेक्चर्स that is taking place with all the worksheets, right. So this is like many states like Chennai, Hyderabad, Telangana, Vishakhapatnam, Mumbai. So these all states have taken several initiatives, and they are working on the virtual classes, and they are operating on daily basis, right. तो अगर यूट्यूब चैनल की अगर बात करें, तो केंद्र विद्यालय संगठन ने स्वयं प्रभा पोर्टल लॉन्च किया है, जहाँ पे लेक्चर्स डीटीएच या ऑनलाइन बेसिकली ऑनलाइन मोड से स्टूडेंट तक पहुँचाए जा रहे हैं, राइट. So this talks about basically how a new options can be explored in this COVID-19 situation, and a virtual learning process can again take a toll in India, right? Now we have a mains question. So among the topic that we have discussed, so उसमें से एक topic पे आपके लिए question है. So we have a topic question from the marine environment. So you have to tell me, discuss the growing concern of the marine environment over the Asia Pacific region, right? So you can write your answer and send answer in the which basically in the WhatsApp number that you can find in the description of this video. और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि बहुत लोगों की कॉपियाँ सेंड कर दी गई हैं, और कुछ की कॉपीज़ पेंडिंग है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज. वी आर नॉट एबल टू सेंड दैट. वेरी सून बाय टुमारो यू विल बी रिसीविंग द कॉपी. तो जिनकी भी कॉपी पेंडिंग है वो आपको कल तक मिल जाएंगी, राइट. नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम वट एवर वी हैव डिस्कस ऑन द यस्टरडे, तो उसके जो आंसर्स है वो आज डिस्कस करेंगे. So the first question, the answer is A. I have talked about the voiceray system. So for this, the statement 3 is incorrect, or you can read more about the Wavell Plan and Simla Conference. So Viceroy Executive Council have all India member except the Viceroy himself and the Commander-in-Chief, right? And the defense would be handled by British General until the full transfer of power was made. So you can read the detail of the explanation here. You can pause this video and take a read of it. Now the second question, the answer is C. I've asked you the Indo-Japanese joint exercise. This is called Sahyog Kajin, and the aim behind this is to strengthen the bond between the two countries, that is India and Japan. So the correct answer here is C. Now for today's question, the first question is coming from current affair. Because you have to say which among the following statement is correct. Bharat Bond ETF, India's first corporate bond exchange, is a trade funded, and it has a maturity period of 3 and 10 years. So which among the following statement is correct? 1, 2, both 1 and 2, or neither 1 nor 2? You can let us know the details of your answer in the comment section down below. And the second question is from the Indian culture with reference to Odissi dance. Which among the following statement is correct? So the first is the one of the position of the Tribhanga intimating the square is very masculine strength and weight of the body equally balanced. And the other position is chalk, which is very feminist stances, where the body is deflected to the neck, torso, and knees. And the third is the dance form is also known as mobile sculptures. So you have to tell me which among the following statements are correct. 1 and 2, only 3, 2 and 3, or 1, 2 and 3. So you can write A, B, C, D, right?
Let us know your answer in the comment section down below. So this was the question from today's new, basically, MCQs. And however you like this video, do let us know, and do like the video, subscribe our Apti Plus Academy for Civil Services. So whatever changes we have incorporated into this session, would like to know your suggestion. What are other things you want to incorporate? Okay, so do subscribe the channel, share your opinions, and through Telegram channel you can download some of the quizzes and participate in the quiz which is there in every morning, and you can download some of the PDF that is relevant for the examination. And I sincerely thank you for listening to this video. अगर कोई भी concern हो तो मैं ज़रूर बताएं. We will be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you.